Hello student, in this video we'll learn about the structure, the very important concept, very important topic in C, that is the structure. Okay, in this video we are going to cover these topics. First of all, structure होता क्या है? What is structure? How to declare a structure? How to initialize a structure? And how can we access the structure members? Basically, what is structure? सो देखो अभी आपको जो भी डेटा स्टोर करना होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, दैट टाइम we use the variable concept to store the data. Sometimes we want to store a multiple data. Okay, that time we use the array. हम array यूज क्यों करते हैं? जब आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा आपको स्टोर करना होता है. लेकिन array जो है, arrays have some limitations. Means what? Array can hold only similar type of data. यानी कि आप array में एक तरीका ही डेटा स्टोर कर सकते हैं. ओके, बट समटाइम्स वी वांट टू स्टोर different data types data in a single name. That time structure is used. So basically what is the definition of a structure? So structure is a collection of a variable. ये क्या है? वेरिएबल्स का कलेक्शन है. बट इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? ये जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं. ओके, सो स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप. और सभी वेरिएबल्स को वी आर गोइंग टू कॉल एज अ डेटा मेंबर्स. तो स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो कि हमें अलाउ करता है टू ग्रुप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. उसी वेरिएबल्स को वी आर कॉलिंग एज अ डेटा मेंबर्स. वो सभी हम एक सिंगल एंटिटी में स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो दीज डेटा मेंबर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप सच एज इंटीजर, इट कुड बी अ फ्लोट और अ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा. राइट, सो सिंटैक्स क्या है स्ट्रक्चर बनाने का? तो स्ट्रक्चर बनाने का सिंटैक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू यूज द स्ट्रक्ट कीवर्ड followed by the tag name. Tag name means for the structure name. Then open curly braces. Within this open and closing curly bracket, आप इसमें आपके डेटा मेंबर्स को लिख सकते हो. तो अभी एक्सप्लेनेशन बोलती हूँ मैं. So see the struct keyword. Why we use the struct keyword? When you want to define a structure in C programming, that time the struct keyword is used at the beginning of the code. Tag name. Tag name is what? Tag name is nothing but your structure name. Then the data type. The data type specifies the nature of a structured data components. Okay. A structure can contain data members of various kinds of data. It could be an integer, it could be a float. Okay. Member name. This is the name of a structured data components. Right. So see, I want to show you one basic, very simple एग्जाम्पल. सपोज मान लो हमें स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है. तो व्हाट इज द सिंटैक्स? एज आई टोल्ड यू दैट स्ट्रक्ट कीवर्ड इज द मैंडेटरी. स्ट्रक्ट कीवर्ड followed by your name of your structure, or we can call it as a tag name. Within this curly braces, these are the data members. Okay, roll number, and it is the type of our data members. Okay, integer, character, float, and these are the data members. Fine. See, now the very important thing, when we create a structure, okay, when we create a structure, that time if you want to access the data members, okay, so these are the data members. If you want to access these data members, we need the structure variable. To access the data members of a structure, we need the structure variable. How can we declare a structure variable? There are two ways by using we can declare a structure variable. Very important part of a structure variable. आपने structure declare किया, उसके बाद आपको वो स्ट्रक्चर में जो भी आपने डेटा मेंबर्स लिखे हैं, इफ यू वांट टू एक्सेस दैट टाइम यू नीड टू यूज द स्ट्रक्चर वेरिएबल. तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल विथ स्ट्रक्चर डेफिनेशन, ये जो है दिस इज अवर स्ट्रक्चर डेफिनेशन. ये हमारे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है. यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है और डेफिनेशन के तुरंत बाद इमीडिएटली
when you write the variables name, okay, this is the type of structure definition type. तो ये जो है S2 S3, these are the variables. You can call it as a reference variable or object of this structure. By using this structure, variable, you can access the data members, right? Then see, now the second way, within a main function you can create a structure variable also. That time you need to use the tag name. Okay, structure का जो भी tag name है वो आपको लिखना पड़ेगा. So यहाँ पे struct keyword followed by the your structure name and the variable name, right? So यहाँ पे देखो मैंने दोनों ही वैसे यहाँ पे डिक्लेयर किए स्ट्रक्चर वेरिएबल्स. ये जो है S2 S3, see this is our structure. See, this is our name of the structure. My structure name is a student, which contains these data members. Now I want to access these data members. That time I use the variables. Okay, structure variables. So यहाँ पे मैंने definition के तुरंत ही बाद मैंने variables declare किए हैं. Okay, और यहाँ पे देखो S1 जो है वो मैंने क्या किया है, मेन फंक्शन के इनसाइड डिक्लेयर किया है. तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दिस वेरिएबल्स? ओके, जो कि हम स्ट्रक्चर के तुरंत डेफिनेशन के तुरंत बाद डिक्लेयर करते हैं. तो जब हम ये जो है S2 S3 ये जो वेरिएबल है, दिस वेरिएबल्स का स्कोप जो है वो स्कोप ग्लोबल होता है. ओके, द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज अ ग्लोबल. एंड ये जो है विद इन अ मेन फंक्शन अगर आपने डिक्लेयर किया है तो उसका स्कोप जो है वो क्या होता है, लोकल हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं. ना टू एक्सेस द डेटा मेंबर, अगेन वी नीड द रेफरेंस वेरिएबल और यू कैन कॉल इट एज अ ऑब्जेक्ट ऑल्सो. by using that variable, and one important thing, we need to use this dot operator. We need to use this dot operator. So by using this dot, okay, by using this dot operator, see, first of all you need to write the variable name, उसके बाद dot, and उसके बाद आपका जो डेटा मेंबर है वो डेटा मेंबर का नाम. फाइन, यहाँ पे भी सेम S1 डॉट और पीरियड ऑपरेटर आप हम बोल सकते हैं उसको, ये यूज करना है. एंड उसके बाद आपके स्ट्रक्चर का नाम जो है वहां पे लिखना है. इफ यू एग्जीक्यूट दिस कोड, सी व्हाट विल बी द आउटपुट. सो सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. यहाँ पे हमने आईडी दिया था, नेम दिया था, सक्सेसफुली वी आर एबल टू प्रिंट. तो ये वाले लेक्चर में हमने देखा हाउ कैन वी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर. अगेन व्हाट इज द स्ट्रक्चर? Structure is the group of data members which having different type. Right? How to declare a structure हमने देखा by using struct keyword followed by the structure name. Coming video में हम देखेंगे how practically हम देखेंगे how can we create the structure. Okay?